Now the question number 2 is, a person standing on the bank of a river observes that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degrees. When he retreats, when he retreats 20 meters from the bank, he finds the angle to be 30 degrees. The angle to be 30 degrees. Find the height of the tree. Find the height of the tree. And the breadth of the river. And the breadth of the river. This is our question. A person standing on the bank of a river observes that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degrees. When he retreats 20 meters from the bank, he finds the angle to be 30 degrees. Find the height of the tree and the breadth of the river. तो फर्स्ट हम फिगर ड्रॉ करेंगे इस क्वेश्चन का. जस्ट इमेजिन AB is the tree. A being the top, B being the bottom of the tree. Let AB is the tree. इसका हाइट हमें पता नहीं है. This is on one side of the bank. On the other side, from a point say P, यहां एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड यूज नहीं किया है. अब पूरा क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहीं नहीं है. ही सेड एंगल सबटेंडेड बाय ए ट्री, ये वाला वर्ड यूज किया है. देखो एंगल सबटेंडेड बाय ए ट्री, इसका मतलब क्या है? ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है. दिस इज रिवर, दिस इज रिवर, दैट इज वन बैंक, दिस इज अदर बैंक, ऑपोजिट बैंक. On that side there is a tree, AB is the tree. In this side the observation point is there. ट्री का बॉटम को ट्री का टॉप को मिलाने वाला लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल को बोला जाता है एंगल सबटेंडेड. ये ट्री है ना, AB is the tree. ट्री का बॉटम को ट्री का टॉप को मिलाओगे तो जो लाइन बनेगा, ये दोनों लाइंस के बीच में एंगल को बोला जाता है एंगल सबटेंडेड बाय ए ट्री और बाय द ट्री. सो दिस एंगल इज फाउंड टू बी 60 डिग्रीज. वही दिया है 60 डिग्रीज. व्हाट इज दैट? ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर observes that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degrees.
The angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degrees. When he retreats 20 meters from the bank, इस बैंक से 20 meters वो पीछे आया है. He has come 20 meters away from this. यहां तक आया है. This is 20 meters. Isn't it? 20 meters पीछे आने के बाद when he retreats 20 meters from the bank, retreats का मतलब है पीछे आना. When he retreats 20 meters from the bank, he finds the angle to be 30 degrees. ये ट्री का टॉप, ट्री का बॉटम से आने वाला लाइन, मतलब ट्री का बॉटम को मिलाओ, ट्री का टॉप को मिलाओ, ट्री का टॉप. This angle found to be 30 degrees. Got the point? Find the height of the tree and the breadth of the river. इस ट्री का हाइट कैलकुलेट करना है. Find the height of the tree and the breadth of the river. Let h is the height of the tree. Let h is the height of the tree and x is the breadth of the river. This is the river, no? यहाँ से यहाँ तक ये river है. That is, this is one side of the bank. I mean, this is one side of the river and that is another side of the river. This is one bank, that is opposite bank. Opposite bank में tree है. Isn't it? यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो है, this is given 20 meters. So this is given 20 meters. 20 meters. Let it be x and this is h. This angle is 60 degrees. ये angle 60 degrees दिया है and this angle is given 30 degrees. So the solution would be, फर्स्ट मुझे डिस्क्राइब करना है. लेट ए बी इज द ट्री ऑफ हाइट h. लेट ए बी इज द ट्री ऑफ हाइट h comma x is width or breadth of the river. X is breadth or width of the river and P and Q are what? पहले यहां से आपने देखा है, बाद में यहां से 20 मीटर रिट्रीट्स किया आपने, isn't it? यहां से फर्स्ट देखा है, बाद में यहां देखा है. एंड P and Q are observation points. थ्योरी पार्ट हो चुका है. अब इन ट्रायंगल APB, APB ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को आप देखो 60 डिग्रीज, 60 का ऑपोजिट साइड मुझे पता नहीं है. दिस इज माय क्वेरी. 60 का एडजेसेंट ये भी मुझे पता नहीं है. 60 का ऑपोजिट भी पता नहीं है, एडजेसेंट. तो इन दोनों के बीच में तो ऑपोजिट और एडजेसेंट tan, सो tan 60. So tan 60 degrees is equals to h by x, opposite side divided by adjacent. tan 60 का वैल्यू होता है √3. tan 60 का वैल्यू √3 is equals to h by x. √3 means √3 by 1 है ना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो व्हाट यू गेट हियर, √3x is equals to √3 into x is equals to 1 into h is h.
इक्वेशन नंबर 1, मुझे ना तो x का वैल्यू आया है ना h का वैल्यू, x का वैल्यू भी नहीं आया, h का वैल्यू भी नहीं आया, लेकिन दोनों के बीच में एक रिलेशन आ चुका है। लेट इट बी, उसको रहने दो। अब देखो, इन ट्रायंगल ए क्यू बी, ये वाला, ये क्यू बी इन दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को आप देखो, इस ट्रायंगल में दिस एंगल इज 30 का ऑपोजिट साइड है ये, जो मुझे पता नहीं है। 30 का ऑपोजिट है ये, 30 का एडजेसेंट मतलब यहां से यहां तक, ये तो पता है लेकिन ये पता नहीं है। एम आई राइट और नॉट? सो 30 का ऑपोजिट इज माई क्वेरी, 30 का एडजेसेंट मतलब यहां से लेके यहां तक, दैट इज 20 प्लस एक्स और x प्लस 20। x का वैल्यू भी मुझे पता नहीं है। सो ऑपोजिट और एडजेसेंट को कनेक्ट करने वाला tan, सो देयरफॉर tan 30 degrees is equals to opposite side which is h by opposite side by adjacent मतलब यहां से लेके यहां तक x प्लस 20, सो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल्स टू h बाई x प्लस 20। tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3 इज इक्वल्स टू h बाई x प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 इंटू x प्लस 20 इज x प्लस 20 is equals to √3 into h. 1 into x plus 20 is x plus 20 is equals to √3 into h is √3h. Equation number 2. यहां पे भी मुझे ना तो x का वैल्यू आया है ना h का वैल्यू, दोनों के बीच में एक रिलेशन, यहां एक रिलेशन, यहां एक रिलेशन। तो अब एक काम करो आप, इन दोनों में से आप एक वैल्यू को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि दोनों आपको चाहिए, h का वैल्यू भी चाहिए, x का वैल्यू भी चाहिए ना। आप एक काम करो, व्हाट इज h वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1, व्हाट इज h वैल्यू √3x, वो √3x यहां रख दो, यहां। इट मींस फ्रॉम equations 1 and 2 I could say what is h वैल्यू, h का वैल्यू √3x है ना, वो √3x यहां रख दो, यहां। तो h एलिमिनेट हो जा रहा, तब क्या होगा बताओ, x प्लस 20 इज इक्वल्स टू x प्लस 20 इज इक्वल्स टू √3 इंटू h। लेकिन h का वैल्यू कितना है, √3x यहां रख रहे हो, h के प्लेस में रख दो √3x। तो आपने क्या किया, h को एलिमिनेट कर दिया है। तब क्या होगा, x प्लस 20 इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 इज 3x, √3 इंटू √3 इज 3x। अब इस x को उस तरफ ले जाओ, तब क्या होगा, 20 इज इक्वल्स टू 3x माइनस x, सो 20 इज इक्वल्स टू 3x माइनस x इज 2x, है ना। सो 2 इंटू x है, यहां इंटू है, इस 2 को इधर लेके आओगे तो डिनोमिनेटर में आएगा। So 20/2 is equals to x. So 2 ones are, 2 tens are. So x equals to how much? 10. Therefore, x is equals to 10. x मतलब क्या है? The width of the river. x is the breadth of the river. हमने assume किया है. So 10 is the breadth of the river. एक x का वैल्यू आ गया, वो x का वैल्यू यहां रख दो, आपको h आ जाएगा। Now putting x is equals to 10 meters in equation number 1 में नहीं, 2 में भी आप रख सकते हो, ये मेरे लिए इजी रहेगा। x का वैल्यू जो 10 आया है ना, आप यहां पे भी रखोगे तो वही आंसर आएगा, लेकिन ये मेरे लिए इजी है। x का वैल्यू अगर मैं 10 यहां रख दूंगा, therefore h is equals to how much? h is equals to √3 into x, so √3 into x। लेकिन x का वैल्यू कितना है, 10 आप रख रहे हो, so h is equals to 10√3। h means what?
h is the height of the tree. ट्री का हाइट 10√3 मीटर से. आप ऐसा छोड़ सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर में तो इरेशनल नहीं है. यू कैन लीव इट लाइक दिस. अगर आपको सिंपलीफाई करना है तो यू कैन डू लाइक दिस. h इज इक्वल्स टू 10 इंटू √3. नो, √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732. 1.732 रखो. 10 इंटू 1.732, 10 और 1.732 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल यहां आ जाएगा, यहां इधर शिफ्ट होगा. So h is equals to 17.32 meters. This is the height of the tower, height of the tree. Okay, note it down.